Hi guys, welcome to Starting Off with Economics. And you know what we are going to do today? We're going to talk about two things which most of the Indians are very passionate about. One, stock markets. Second, food, right? Just the way most of the Indians like talking about markets and food, so do I. And today I'm sharing my passion with a very special guest on the show. Swaroop Mohanty sir, who's the Vice Chairman and CEO of Mirae Asset. He manages more than 2 lakh crore in AUM, investing in India and investing into the future of our country. We are going to cover multiple aspects. One, very interesting and very exciting, IPOs. Second, the budget, the way it keeps impacting our market year on year. Every year there's a progressive budget that comes out and there's anticipation that gets created with this. And finally, what we are going to talk about is paneer tikka. My favorite, I can't live without it, and I'm sure a lot of you guys are also equally excited about how me and Swaroop sir are gonna stir up the economics while cooking paneer tikka. Guys, please join me in inviting on the show Swaroop Mohanty. Welcome to the show. I'm super excited to have you here. No, thank you so much, Ajay. I'm really looking forward to this one. I can see you are still in your formals. You'll have to roll up your sleeves because we are gonna cook something very exciting. Yeah, I'm looking forward to it. Perfect. पहले मुझे ये बताओ, ये खाने का शौक सिर्फ खाने का है या बनाने का भी है? We come from Odisha. Okay. और बचपन से अगर हमारे घर आप आते हो तो शुरुआत होती है कि ब्रेकफास्ट पे क्या खाएं, अरे वेरी नाइस. इसके बाद दिन बीतता है कि लंच में क्या करें, फिर शाम को क्या खाएं. तो पूरा एजेंडा पूरा अगर 1 घंटे का डिस्कशन होता है, नॉर्मल डिस्कशन, 45 मिनट्स इज फूड. अमेजिंग. साउंड्स लाइक माय हाउसहोल्ड. एंड आई एम मैरिड टू अ बंगाली. ओह वाओ. तो फिर वो यही चलता है हम लोग का. So, do you really cook in the kitchen? No, I don't. I used to help my mom बचपन में because she used to make me help. Wow. But I don't do much at home now. My wife will not like this. So If she sees me doing this, तो कुछ और ही माहौल होगा घर जाके. guys, मुझे ना आग लगाने का बहुत शौक है. चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे हमारा पनीर टिक्का रेसिपी. बहुत तीखा बना है, मुझे मजा आ रहा है. But what I'm gonna do is, मैं फोटोग्राफ्स लूंगा स्वरूप के cooking here in our kitchen and send it to his wife, and then let's see how she reacts. Cool. So let's do this. मैं पनीर काटता हूँ. जी. Right, I'm very good at cutting things. And आप marinade बनाओ with the curd and all the masala. ठीक है, पहले आप काटो, फिर we'll marinate. Then perfect. So while we are doing this, I would love to learn about your life journey from being an underwriter to becoming CEO of Mirae. How did this happen? And it's like, what's been your life journey? What's the lesson that you've learned in so many years? Well, life started back at home in Bhubaneswar. Those days in the mid-90s, India was privatizing. Yes. So one thought कि पहले तो my parents wanted me to study science. And I'm not a bad student, but I was terrible at science. So बहुत debate हुआ था, and both my parents are professors in zoology. तो जब मैं बोला मैं कॉमर्स पढ़ूंगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था घर में. एंड आई सेड कि बेटर देन स्टडिंग कॉमर्स देन फेलिंग इन साइंस. ही डिडंट बिलीव मी मच, बट सो जब प्राइवेटाइज हुआ तो देन वी थॉट अल्टरनेट करियर्स वुड स्टार्ट रादर देन ट्रेडिशनल साइंस रिलेटेड इंजीनियरिंग, being a doctor in those days. Even today, civil service is very big. Yeah. But luckily, I backed myself in wanting to build a career in financial services. I remember one basic thing with my father that I want to earn money, but I want to earn money after paying my taxes fully. Wow. वहाँ से शुरुआत हुई एक career की journey. I came to Delhi to do my MBA, and then for some reason got into, those days merchant banking was very big. It was, yes. Mid-90s, underwriting से शुरुआत हुआ था, and then from there got into resource mobilization. I started Interesting. Getting into the FD department of the finance companies. And then the graduation from FDs to mutual funds, and now finally I'm with a product I love. So धीरे धीरे होते होते कुछ बन गया. Amazing. And I got this great opportunity of working with Mirae in 2011. And so you're managing 2 lakh crore in AUM. जी. Right. Sir, ingredients ऐसे मिलाइएगा जैसे आप stock market में 2 lakh crore invest कर रहे हो. नहीं, most important is how you build that portfolio. Yeah. And हर एक का importance रहता है. What you say is absolutely correct. Let us see how it comes out. Try तो करेंगे. Exactly. Perfect. So Ajay, let me start marinating. Actually, marinating is very interesting because you start putting in each ingredient. थोड़ा curd लिया, then we put in the garlic and all the pastes inside. Brilliant. With all these
different spices and pastes is very similar to the budget, right? Yes. When you look at the finance minister trying to build the budget of India, maybe उनका main focus रहता है to address growth, inflation and employment, जैसे हम लोग कोशिश करेंगे पत्रिका बनाने के लिए. And but once you start mixing, you look at all the resources that she has to build a budget which will provide money for all this, and where to get the money to provide for this money is the key or the art of budgeting. Exactly. Very similar to cooking. And जैसे आप जब मैरिनेट कर रहे हो, आई एम फीलिंग लाइक यार ये थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए, तीखा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, right? I think market also has that same kind of anticipation from the budget, and irrespective of how good the budget is, we always go and react to it. Yeah, it's like the taste, no? हम कुछ टेस्ट सोच के आते हैं, टेस्ट कुछ और बनता है, but the cook would have made it for the benefit of his or her. Swaroop, the most interesting part about 2024, 300 companies went IPO in an election year. Never happened before, never heard of. Globally, it's a unique phenomenon. No, I think irrespective of the budget, no? The IPO market is a story of India. Correct me if I'm wrong. But typically, as a promoter, see the difference in the country. And earlier, हम ये मानते हैं कि छोटे promoters did not want to bring an IPO. उनको ये corporate governance, transparency, या खुद का control खोना, एक अलग सा एक महसूस होता था. But now the same promoter wants to list the company to showcase to the world what they are creating. Brilliant. Two things for me. One, shows the need or the growing corporate governance environment of the country. Yes. And second, the promoters wanting to kind of display कि उनका क्या growth prospect है, उन्होंने क्या बनाया है. Yes. No wonder it was the largest IPO issuances market globally last quarter. Wow, I didn't know this. Can you think of it? India, 3% of global market cap. Yes. Is now showcasing one of the highest number of public issuances in the world. Amazing. Unheard of. Is a very changing trend of the country. फिर आज के 5 साल पहले, I remember all the tech companies funded by VCs. We would all go and list our companies in US saying India में लोगों को business नहीं समझ में आएगा. If I'm burning capital, they not value the business. But this is all changing now. All the tech companies are coming for a IPO in India. I mean why just the tech companies? I mean, I work for a Korean firm. Yeah. I think Hyundai itself was a good example of how a global company now comes to this market. Yes. Lists itself here and creates some unbelievable value for the very unexpected, very unheard of. Like if you would have told me in the first instance, I would have thought कि यार Hong Kong market जाएंगे, US market रहेंगे, but why would they come to India? Impossible. Amazing. But just shows both sides. One, their view on the prospects or the growing prospects of our capital markets. Yes. Please don't underestimate the guardrails of the capital market that India has, thanks to the regulators. I think one of the strongest frameworks I completely agree. have been built in this country, and that I think बाहर से कोई list करेगा ना, वो पहले देखेगा. Okay. Is my money safe? Yes. Is my entry exit correct? And I think the liquidity of the market also is kind of testament to that. Yes. What we are seeing is a market developing, and I'll dare say, which may not have any correlation to the market so far. And we have seen this like 2002, 2008, all of these major jitters that the global market saw. Yeah. In India, we did not see such a huge correction in the market. We were relatively insulated to the global economy. Well, look at the underlying basic nature of our country right now. It is like an isolated island in the world. सबके अपने problems हैं. And I think one part is since we consume our own. Correct. We've been able to withstand the entire vagaries post-COVID. And मेरे हिसाब से it was before Christ and after Christ earlier. For us, it's before COVID and after COVID. After COVID, this country is very different. It's very different, and the consumption appetite in the country, the infrastructure appetite in the country is so huge. I can't see anything changing for at least next 2 decades. I mean, I'll put 1 decade, that's my view, because there are some underlying risks which are growing. But on the consumption, maybe 3 decades. Amazing. I mean, we are moving from a low and mid-level consumer to a mid and high-level consumer. And we are doing this in Bangalore.
Bangalore is seeing it first, I think. The change in Bangalore over the last decade would not have any correlation to the Bangalore before that. You know, there's a huge exuberance in the market right now, especially with IPO and primarily with retail participants. दो चीज़ें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग देखी 1.8 लाख करोड़ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग टू क्रॉस 3 लाख करोड़ इन IPO फंड रेज इन इंडिया. अगर लास्ट ईयर के नंबर्स अनबिलीवेबल लग रहे हैं तो इस ईयर मुझे पता नहीं क्या होगा एंड वी आर जस्ट इन जनवरी राइट नाउ. बट मोर इंटरेस्टिंगली एंड आई एम सो क्यूरियस टू आस्क यू दिस, ऑल द रिटेल पार्टिसिपेंट्स IPO में एंटर करते हैं, दे विल गेट सम एलोकेशन विच इज़ वेरी स्मॉल एंड जैसे IPO होता है इन अ वीक इन 2 वीक दे विल गो एंड सेल द स्टॉक. इज दिस द राइट प्रैक्टिस या शुडंट दे होल्ड ऑन टू अ स्टॉक विच they have so passionately waited for the listing to happen? There are two sides to the story. जब हम लोग शुरू किए थे तो वैसे ही थे, क्विक रिटर्न्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और ये डेमोग्राफी यंगर हो रहा है तो उनको तो और भी जल्दी चाहिए. करेक्ट. बट ये सीखेंगे. लाइक आई कम फ्रॉम म्यूचुअल फंड बैकग्राउंड. पहले म्यूचुअल फंड के IPO होते थे. वाह. हाँ, 10 रुपया का 12 रुपया जैसे NAV बढ़ गया तो आपने जाके निकल जाते थे. हाँ. बट धीरे धीरे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बनता है. IPO is the beginning of the company's journey in the public market. Typically, अगर कोई भी बड़ा स्टॉक आप लेके चले, wealth creation comes from the promoters disseminating wealth to the investor. And they're sharing it with the rest of the economy. Normally price में reflect नहीं होता है, through dividends, through stock splits. Yes. उससे wealth बनता है. Correct. Right? 5% of the wealth happens in stock price. ये सीखने में थोड़ा टाइम लगता है. But the young of India, I think, हमसे ज़्यादा जल्दी सीखेंगे. मे बी एट दिस मोमेंट फर्स्ट स्पेस ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है. आई सी दैट चेंजिंग वेरी क्विकली. मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस. आई एग्री. एंड यू नो वेरी इंटरेस्टिंगली आई थिंक जो यंगस्टर्स है दे आर गोना टेस्ट एवरीथिंग. सिंग म्यूचुअल फंड्स, FNO, ऑप्शंस, फ्यूचर्स भी करते हैं और हम करते करते नॉर्मल स्टॉक्स भी खरीदना चालू करते हैं. सो आई थिंक द प्रोसेस इज वेरी मच लाइक मैरिनेशन. धीरे धीरे once you marinate everything and put in the पनीर, धीरे धीरे एक बनता है. वो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है. पेशेंस चाहिए. जी जी जी. ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज पेशेंस. हाँ. बट वो कहना बहुत ईजी होता है, करना बहुत मुश्किल. लेट्स मेरे साथ भी होता है. से आप इधर ले आओ, इसको डालना चालू करते हैं. जी. राइट. से इफ आई सी अ प्रॉफिट ऑफ 10% इन वन ऑफ माई स्टॉक, लाइक यार इससे एग्जिट कर जाते हैं. हाँ. राइट. और जिसमें नुकसान हो रहा होता है उसको मैं लेके बैठा रहता हूँ 2 साल तक कि कब उसमें पैसे आएंगे फिर जाके एग्जिट करूंगा. नहीं, वो लॉस अवर्जन बायस होता है ना. यस. आप किससे भी पूछो किसमें ज्यादा पैसा बनाए, शायद याद नहीं रखेंगे, बट किसमें लॉस हुआ तो वो तो है. बट एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, बट धीरे धीरे पीपल विल लर्न. हाँ, बिकॉज दिस इज लाइक माई पेरेंट्स सेइंग यार स्टॉक मार्केट में नहीं है पैसे डालना, वहाँ पे पैसे खो जाएंगे. चाचा जी ने खोए, मामा जी ने खोए. सी दैट मार्केट एंड दिस मार्केट आर टोटली डिफरेंट. यस. आई थिंक हम लोग ये कहते हैं कि एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मार्केट हुआ इन द लास्ट 5 years. पहले तो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मेरे पेरेंट्स के टाइम में 2-3 फाइनेंशियल इंडियन इंस्टीट्यूट्स होते थे, सपोर्ट करते थे मार्केट. करेक्ट. फिर FIs आ गए. अभी FIs के बाद जो हम बात कर रहे हैं रिटेल पार्टिसिपेशन हो गया है. Yeah. तो एक नंबर ऑफ पीपल इन द मार्केट काफ़ी बढ़ गया है. आई थिंक फ्रॉम इशुएंसेस, द नंबर ऑफ स्टॉक इशुएंसेस हैव ग्रोन ड्रामेटिकली. एंड इंसिडेंटली बल्क ऑफ द इशुएंसेस आर इन द मिड एंड स्मॉल. ट्रू. And the domestic money that is coming in, ये SIP. Yeah. I think जो आज के 5-10 साल पहले डिपेंडेंसी थी कि FI कैपिटल जो आता है उसी से मार्केट में मूवमेंट्स आता था. जी. That's not happening. नो, डिपेंडेंस डेफिनेटली कम हुआ है, बट आई फील सबका इंपॉर्टेंस रहा है. ठीक है, इसको डालना चालू करते हैं. इट लुक्स अमेजिंग. आई कांट वेट टू ईट दिस. या, इट्स गेटिंग हीटेड, रेडी फॉर द ठीक है, कुकिंग. तो ऑयल डालो फिर. जी. Very important for the heat to be okay, very similar to markets. Yes. And सब कुछ ठीक होना चाहिए for the right portfolio. I agree. You know, sometimes I think cooking is so synonymous to how you invest in stock market. Right ingredients, right temperature, आप सही समय पे एंट्री कर रहे हो. And I think more importantly, अगर आपने बहुत देर कुक करनी छोड़ दिया, your paneer will get charred. Absolutely. And in the context of market, अगर आपने बहुत ज़्यादा देर एक पोर्टफोलियो को एग्जिट नहीं किया है, you might just not see the kind of IRR that you are expecting. So finally, you make money when you exit. That is the notion. So it's very important to come in with those relevant targets.
दोनों साइड, अपसाइड और डाउन साइड में कभी कभी keeping a stop loss target is underestimated. Yes. But most important target of when you want to exit should be very clear. सभी investing बुकिंग प्रॉफिट बहुत जरूरी है, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू. दे आर लाइक अच्छा लेके हम बैठ गए स्टॉक, अब वो 20 साल बाद देखा जाएगा क्या होगा. नहीं, अगर 20 साल बाद भी देखा जाएगा उस पर भी टारगेट आप रखो. गॉट इट. तभी अदरवाइज वो माइंडलेस गेम हो जाता है. सो लेट मी स्टार्ट. वाह, सही है. मुझे ऐसा लग रहा है that I'm putting the budget together on the flame right now. You know what is very interesting? Last year, it was basically two different budgets that came. One was an interim budget. We saw a rally after that. But even after the full budget that came in, there was another 1,000-point rally that happened last year. And interestingly, there's no populist budget that has been coming in last couple of years. It's very focused on infrastructure growth. And I believe the kind of focus that the government has on growing the infrastructure is as it is giving an impetus to the market. What do you think? What you're saying is absolutely correct. The budget is for the country. If the country is good, then people benefit. It's not the other way around. The country has gone through 2-3 different phases. पहले अगर अब जब छोटे थे तो आता था रोटी कपड़ा मकान. Correct. Right? Give the basics to people. फिर it moved to बिजली पानी सड़क. Yes. Right now it is the physical infrastructure of the country. आप खुद देखें ना Bangalore airport. See what it has done. This is like the best airport. I think the best airport in the world right now. I agree. अगर आप see that effort that has gone into creating the physical infrastructure, roads have been built, airports have been built, but parallelly there is a third infrastructure which is building, जो हम कहते हैं JAM, हाँ. Jan-Dhan, Aadhaar and the mobile. That is the digital infrastructure which is getting created. Interesting. So broadly, India is setting itself up for creating a platform for trade to happen. And that is the objective of the budget. This is very interesting, right? Because we are suddenly becoming a large global player जी. where interest from global markets is now coming to India saying this is the place to invest. There is secular understanding that India is the growth market. ऐसा कोई country नहीं है which will say, and I come from South Korea. Yeah. Trust me, for us in 17 countries, किसी कंपनीज में होता है कि आप मैंडेट दे दो इंडिया फंड. वी रन अ डिक्टेट. 17 countries India fund. That is our focus on this country. Amazing. स्वरूप, ये तो बहुत ही बढ़िया बना है. बहुत अच्छी सुगंध आ रही है. Looks like all the ingredients is now forming a good portfolio. Results अभी आने लगे. Look at this. हाँ. Right, and थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा. It's like it has something for everyone. I like a little तीखा food, तो मेरे लिए वो तीखा टेस्ट आ रहा है. हाँ, बीच में मुझे थोड़ा तीखा लगा तो भी. It is nice because you know the markets are not just for one person. It's not just for one kind of investor. कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, कोई लॉन्ग टर्म है, किसी को सिर्फ छोटे ट्रेड्स करने हैं, किसी को अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रख के रखना है. एंड देन देयर आर डे ट्रेडर्स जिसको सिर्फ whose day starts with market and ends with market. But it is catering to everyone homogeneously. So that is the beauty of the market. और हर एक मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, सबके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं. करेक्ट. इसलिए इन्वेस्टर को अपना ऑब्जेक्टिव लेके बाजार में आना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबका ऑब्जेक्टिव करेक्ट है. हाँ. बट वो क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं लेके आते ना तो शायद थोड़े लॉस्ट हो सकते हैं बाजार. आई एग्री. एंड यू नो आज के 10-20 साल पहले वो वॉल्यूम्स नहीं थे दैट इट कुड केटर टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. बट आज के दिन इवन इन FNO, India's volume is 8 times that of Nasdaq. It's unheard of, unexpected. Yes. मैं और एक डेटा आपको देता हूँ. 2019 में मार्केट कैप, द स्मॉलेस्ट मार्केट कैप ऑन द लार्ज कैप हाँ. size is the same as the smallest mid cap now. Wow. That's how far we How large the market has gone. The smallest mid cap size is the smallest small cap size, right? So I think hats off one to the regulators to be able to drive this kind of growth Absolutely. with proper guardrails. जी. And I think hats off to folks like you who have brought in so much of capital, who have created confidence in the market. See, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे for me, it's like Swaroop is there managing this capital with his team, and I have that trust, I have that confidence, and that's the reason I'm able to invest more money through mutual funds. I speak on behalf of the industry. It's been now almost 30 years of the industry track record. And to be fair to the fund managers of the industry, they have put a good track record. And जब track record बनता है तभी confidence बढ़ता है, you know, and that's the cumulative
sort of effort which has led to what now 25,000 crores per month SIP from retail investors. Wow. आप सोचो 25,000 per month we are ready to buy. That's not a small figure. Amazing. And that's the reason companies like Hyundai are doing their IPO in India. Correct. Remember, the great secret to good paneer tikka is the mix. It's very similar to investing. If you rush it, you'll end up getting bad paneer tikka or a flat portfolio. That's a very interesting insight. No, I completely agree to this. But Ajay, पनीर टिक्का हो या IPO स्ट्रैटेजी, जब तक गरम तब तक नरम. You know, if you exit at the right time, you savor the perfect returns. Absolutely. स्वरूप, I think ये कुक हो गया है. बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है. I can't wait to eat this. Yeah, let's start plating then. Done. मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ आपके लिए. जी जी. आ जाओ. Start. ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ बजट एलोकेशन कर रहा हूँ. ये जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये जाएगा हमारे आर्मीज के पास डिफेंस में, वाह, ये जाएगा हेल्थ केयर में, राइट? ऑलमोस्ट फील्स लाइक आई एम पुटिंग टुगेदर अ बजट फॉर द इकोनॉमी. जी, वेरी सिमिलर टू आवर पोर्टफोलियो बिल्डिंग. जब हमें एक फंड बनानी होती है, हाँ, तो वी स्टार्ट विद द काइंड ऑफ स्टॉक्स वी वांट सेक्टर वाइज. कभी कभी थीम पसंद आते हैं, जैसे लास्ट टाइम अगर आप कह रहे हैं थोड़ा एलोकेशन ज़्यादा था कुछ सेक्टर्स में, हमें जैसे अभी हमारा हाउस व्यू है कि बैंकिंग काफ़ी अच्छे हैं, तो शायद थोड़ा ज़्यादा पैसा बैंकिंग में लगाएं. ओके. तो धीरे धीरे करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करने में हर एक इंग्रेडिएंट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है. एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन द राइट मैनर या फॉर्म द बेस्ट पोर्टफोलियो. correct. It saves you from the jitters and the shocks, जी, right? And at the same time gives you a return which is higher than the market. what you said is very important. Normally लोग अपसाइड देखते हैं. हाँ, सेविंग द डाउनसाइड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. इसलिए डिफरेंट चीज अब जितने प्रोपोर्शन में लें, पोर्टफोलियो उतना स्ट्रांग बनता है. चलिए स्वरूप, मेरा बजट तो रेडी हो गया. आप ना पोर्टफोलियो कंप्लीट कर लो. मैं भी अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट कर लेता हूँ. इज लुकिंग वेरी नाइस. हाँ, क्या लग रहा है? अरे वाह. राइट. और थोड़ा गार्निश. क्या बात है. हर एक पोर्टफोलियो का एक लास्ट इंग्रेडिएंट होता है जिससे अल्फा बनता है. Exactly. दिस इज द फाइनल टेस्ट. This looks beautiful, right? Just the way our country is now progressing, both in the capital market and from the GDP growth perspective. I am so tempted to taste this now. I swear I am really looking forward to having this. I don't believe we made it. Before we start eating, let me add a very interesting ingredient, the butter. It's all about the butter. ये ना मुझे ऐसे लग रहा है ऐसे स्टॉक्स में हमारे पास जो बीटा स्टॉक होता है, and probably the smallest part of my portfolio would give me the highest return through just that one or two beta stock that I add. So true. हम लोग पोर्टफोलियो एक कोर और सैटेलाइट बनाते हैं. कभी कभी वो सैटेलाइट ही किक कर दे जाता है ऑफ द पोर्टफोलियो. सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट बटर दिस विल नॉट टेस्ट एज इट इज. सो कैन वी स्टार्ट? Let's do that. Thank you. स्वरूप, मुझे देख के विश्वास नहीं हो रहा ये हमने बनाया. I swear I agree. It's looking so nice. The perfect portfolio. Amazing. And such good returns. That's good. Fantastic. Portfolio अच्छा बनता है तो returns ठीक आते हैं. It's about the mix as we discussed. And these garnishes like हरी चटनी, right? These are the ups and downs of the market जो तीखा और मीठा होता है. जी. Actually लाइफ का मजा उसी में है. जी. एक कहावत है, if you take care of the markets when in its bad days, the market will take care of you in your good days. Very interesting. You know Sarup, in life कभी कोई लोग बुरे नहीं होते हैं, उनका समय बुरा होता है. अगर आप अच्छे लोगों का साथ उनके बुरे समय में दोगे तो जब उनका समय अच्छा आता है वो हमेशा आपका साथ देते हैं. It's true about good companies also. एक अच्छा फंड मैनेजर क्या बोलता है कि बाय अ गुड बिजनेस एट अ गुड प्राइस. जब उसका प्राइस अच्छा हो तभी भाव अच्छा मिलता है, तभी लेना चाहिए. True. Life lessons, food and stock market. They're also intertwined. Yeah, couldn't have been better. You know, you realize this as you do it, right? True. Sarup, thank you so much for coming on the show. मैंने आज बहुत कुछ सीखा
And I'm sure the audience who's looking at this, who's learning from your insights, उनको बहुत कुछ सीखने मिला होगा. But Ajay, I should be thanking you. I had no clue that this is how enjoyable this would have been when I took the flight in the morning. So thankful to you for doing this for me. I learned so much today. Swaroop, I'm thanking you because अब मुझे पता है मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा. I'll have a paneer tikka restaurant after this. You have a customer for sure. And with that, we sauteed some very interesting paneer tikka and learned good market insights from Swaroop. I'm hoping this is going to help you in your investment journey. Stay tuned till we come back with the next episode.